In the name of Allah, the Rahman, the Rahim, who taught man by means of the pen. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is universal grammar. Universal grammar is one of the important topics in the course contents of psycholinguistics. So, let's study first the outline of the lecture. And today's lecture, we will be defining that what is universal grammar. What are the important components of universal grammar? These components are principles and parameters. And then, I will be studying universal grammar with reference to language acquisition and language learning. So let's study with the introduction. Dear students, as we know that second language learning is an issue in the theory of linguistics that concerns many researchers who are trying to answer the fundamental, the very basic question, that is, how people learning a foreign language, how people learn a foreign language. Like, what are the issues, what are the difficulties and problems they are facing while learning a foreign language. Even adults, the mature, in contrast to children, are observed to be less successful in language learning. Why? What are the reasons? Or what are the factors that are affecting the adults, the mature people, like the university students, the process of second language or foreign language learning? So, there is like one factor which is very much involved in this process, which is universal grammar. So, in today's lecture, we are trying to learn what is universal grammar, what are the issues we are facing in learning a second language or foreign language. Dear students, there are controversies in universal grammar. Like, different concepts are there by different authors, researchers, and linguists. Like, for example, the first question, which is regarding the contribution of universal grammar. That what is the contribution of universal grammar in first language, in mother tongue acquiring, okay, and the acquisition of first language, what is the contribution of universal grammar? And what is the contribution of universal grammar in second language acquisition or second language learning? And what is the contribution of universal grammar in third language learning or foreign language learning? Is it work similarly in all languages, like in first language learning, in second language learning, and third language learning, or foreign language learning? No. Different views are there, dear students, different opinions by different researchers, authors, and linguists. They are saying, like, the first view, the first thought is that universal grammar plays very important role in the acquisition of first language, the mother tongue, in the mastery of the first language. It takes place, okay? But some scholars, they are saying, yes, in first language it plays very important role, but in second language acquisition, it cannot be ignored totally. We cannot ignore the role, the contribution, the advantages of universal grammar. This is another view, okay? Third concept is that the school of thought of the one group of linguists, that is, they are saying that, like, for first language we need universal grammar, and for second language, first language will be best. We are learning second language on the basis of first language. There is there is no role, there is no contribution of the universal grammar in learning second language. But
first language plays the role of universal grammar in the process of second language acquisition or second language learning. Okay, like they are going against the universal grammar, or they are in negation of universal grammar in second language acquisition or second language learning. So there comes the third concept that is regarding the third language or foreign language learning and acquisition. They are saying that like similar role is played by the first language and sorry, dear students, so now we are like able to answer or to learn these controversies, the contribution of universal grammar in first language, in second language, and foreign language. Now, what is universal grammar? Dear students, universal grammar, shortly UG, was first coined by Noam Chomsky, who postulated that there has to be one grammar that applies to all languages. For all world languages, there is one similar grammar, okay, which is present in the mind of the learner, which is God gifted, which is inborn capacity for language learning, and similar for all languages. Okay, like children, they are getting this capacity by birth. Okay, it's a natural process. Like we all are born with one capacity for language learning, which is called like the capacity of the mental landscape, okay, with which we born. That is called universal grammar, in which is similar for all world languages. It justifies children's ability to grasp any language presented to them in their early years. Okay, हम एक कैपेसिटी के साथ, एक एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, गॉड गिफ्टेड कैपेसिटी है, ठीक है, वो कैपेसिटी सिमिलर है फॉर ऑल वर्ल्ड लैंग्वेजेस. जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके लिए ये कैपेसिटी क्या है, सेम है. इसको नॉम चॉम्स्की ने नाम दिया यूनिवर्सल ग्रामर का, ठीक है, कि ये एक मेंटल लैंडस्केप है, मेंटल एबिलिटी है, मेंटल कैपेसिटी है जिसके साथ बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, और वो उनकी माइंड में फिक्स की जाती है बाय बर्थ. Therefore, जब ये कैपेसिटी सेम है फॉर ऑल लैंग्वेजेस, therefore all languages may be regarded as structurally similar and easy to compare. Like there is strong comparison, there is strong correlation among the all world languages because they are based on one capacity, okay, which is present. They are like based on mental ability, which is fixed in the mind of the learner or in the mind of the children. So that's why all languages are structurally similar and they are easy to be compared. Dear students, universal grammar is a term in linguistic theory which claims that all languages possesses the same principles of grammar, therefore occur to be similar. Like for all languages there is one grammar, okay, which is similar. So that's why उस ग्रामर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं ना, जिसके ज़रिए सारे लैंग्वेजेस सीखी जाती है, ऑल वर्ल्ड लैंग्वेजेस सीखी जाती है और वो सिमिलर भी है, तमाम लैंग्वेज बोलने वालों के माइंड में फिक्स किया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया यूनिवर्सल ग्रामर. इट इज़ अ ग्रामर that is believed to be present in the mind of every child and at the same time justify the tremendous speed and complex processes that account for child language acquisition. Like other भी parts हैं, ठीक है, mind में responsible for other actions, for other functions, but जो function language का perform किया जाता है
which is performed by universal grammar. However, in order to understand the process of first language acquisition and second language acquisition, it is important to write about the components of universal grammar. Now we are having the important components of universal grammar, dear students, principles and parameters. Principle and parameters, these are the important components of universal grammar. Noam Chomsky, in his universal grammar model, makes the distinction between principles and parameters. Dear students, these are the two main components of universal grammar. So Noam Chomsky, he is making in this model the distinction between principles and parameters and classifies them as major components that are like elucidate first language acquisition, that helps in first language acquisition, and alternatively in second language acquisition also. So now what are these parameters? According to Chomsky, he is saying that language is governed by a set of highly abstract principles that provide parameters which are given particular settings in different languages. All language is governed by a set of highly abstract principles that provides parameters. It can be understood that universal grammar is divided into principles and parameters. Yes, these principles and parameters control the shape human languages can take and at the same time make human languages similar to one another. On the basis of these principles, we are controlling the shape of human languages, and at the same time, the similarities can be taken into account on the basis of principles. Principles kya hai? All languages are considered to be fixed rules, okay, to have fixed rules, yes, where principles remain stable. जहाँ all languages के fixed rules है, ठीक है, जिसका मतलब है कि principles क्या है, वो stable है. They can be modified, yes, with the passage of time. Principles of a language are claimed to be universal and stable components of universal grammar. अच्छा, यहाँ पर आप देखिए टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है प्रिंसिपल्स और पैरामीटर्स यूनिवर्सल ग्रामर की. प्रिंसिपल्स जो है वो स्टेबल कंपोनेंट है, ठीक है, और चेंज नहीं होते हैं, सारे लैंग्वेजेस के लिए सेम है प्रिंसिपल्स. पैरामीटर्स जो है वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स हमारे साथ पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है. अच्छा, अब जानने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अब प्रिंसिपल का एग्जाम्पल लेते हैं. इज अ प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल, वन में कंसिडर द आर्गुमेंट दैट ऑल सेंटेंसेस मस्ट कंटेन अ नाउन फ्रेज एंड अ वर्ब फ्रेज which at the same time is a feature of structure dependency of a language. तमाम वर्ल्ड लैंग्वेजेस में क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कि वो नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज, ठीक है. अनदर एग्जाम्पल अगर आप ले लें कि तमाम लैंग्वेजेस में ये कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है. सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, और वर्ब होता है, ठीक है. नाउन होता है, सब्जेक्ट, नाउन कौन होगा, सब्जेक्ट, ठीक है. सो इसी तरह सारे लैंग्वेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है. सारे लैंग्वेजेस वो किस पे, स्ट्रक्चर पे बेस करते हैं. दे आर depending on one structure which is principle based. So we have noun phrase and we have verb phrase. At the same time, it is considered a feature of structure dependency of language. It is believed that all languages are structure dependent, therefore regarded as similar. Yes, तमाम languages जो है वो structure पर depend करती है, ठीक है. Therefore they are similar to one another or each other. There is similarity because they are structure based, they are structure bound.
Principles can be regarded as common feature in all languages. अब ये कॉमन फीचर है ना कि सारे लैंग्वेजेस में क्या है, नाउन है, सारे लैंग्वेजेस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, सारे लैंग्वेजेस की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में हम ये कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, प्रेडिकेट हो, या सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, ठीक है। दीज थिंग्स, दीज कंपोनेंट्स आर यूज। कभी ऐसा लैंग्वेज नहीं मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र ना हो या जिसमें सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ना हो, प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट ना हो, नहीं। सो ये ऑल लैंग्वेजेस के लिए क्या है, सिमिलर है। पैरामीटर्स आर नोशंस दैट मेक डिफरेंसेस अमंग लैंग्वेजेस। जी, प्रिंसिपल्स के बेस पर तो हम सिमिलरिटीज देखते हैं, और पैरामीटर्स के बेस पे हम क्या देखते हैं, हम डिफरेंसेस देखते हैं, हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं अमंग लैंग्वेजेस। डियर स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में है कि ही गोज़ टू यूनिवर्सिटी, ही गोज़ टू यूनिवर्सिटी। ही क्या है, सब्जेक्ट है, और गोज़ टू यूनिवर्सिटी, गोज़ क्या है, वर्ब है, यूनिवर्सिटी क्या है, ये आप देखें कि यहाँ पर ये कंप्लीमेंट है, ठीक है, क्या है, कंप्लीमेंट। ही गोज़, और शी ड्रिंक्स वाटर, शी ड्रिंक्स वाटर, शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है, और वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या स्ट्रक्चर किया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इन इंग्लिश वी हैव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब उर्दू में आप देखिए, वो पानी पीता है, वो पानी पीता है, पानी का वर्ड क्या है, ये फर्स्ट आया है, वो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सॉरी, वो पानी, पानी क्या है, वो सब्जेक्ट है, पानी ऑब्जेक्ट है, पीता है ये आखिर में आया है, ठीक है, वर्ब आखिर में है। तो उर्दू में स्ट्रक्चर किया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये पैरामीटर्स है तो से सिमिलर, सब्जेक्ट भी है, वहाँ पर भी उर्दू में भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट है, लेकिन जो प्लेसेस है वो डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स, ठीक है। इसी तरह पश्तो में आप देखें, अच्छा यहाँ पर आप देखें कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल से पहले ऑन आया है, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। अच्छा उर्दू को आप देखिए, किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, किताब क्या है, ये नाउन है, ठीक है, मेज पर है, मेज पर है, मेज से पर, मेज के बाद आया है पर क्या है, प्रीपोजिशन है। सो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन है, प्री का मतलब है बिफोर, पहले, और उर्दू में पोस्ट पोजीशन है, क्या है, पोस्ट पोजीशन, बाद में आता है ना, मेज से बाद में पर आया है। सो किताब मेज पर है, ठीक है। अच्छा इसी तरह आप देखिए, ये पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स आर डिफरेंट, ओके, पैरामीटर्स मेक्स differences among languages while principles make like similarities among languages. On the basis of principles we are seeing that all languages are similar, while on the basis of parameters we are seeing that there are differences. These are the two main components of universal grammar, dear students. अच्छा अब आप पश्तो को देखिए, पश्तो लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में क्या है, पोस्टपोजिशन है, इंग्लिश में प्रीपोजिशन है, पश्तो में दोनों है, प्रीपोजिशन एंड पोस्टपोजिशन। अच्छा अब आप देखिए, किताब पमेज बांधे दे, किताब पमेज बांधे दे, बांधे, किताब प क्या है, प प्रीपोजिशन है, पहले आया है ना मेज बंद, किताब मेज बांधे, बांधे क्या है, ये पोस्ट पोजीशन है, प मेज बांधे, ये तीन वर्ड आप ले ले यहाँ, किताब मेज बांधे, पमेज बांधे दे, प प्रीपोजिशन है, मेज क्या है, नाउन है, और बांधे फिर क्या है, पोस्ट पोजीशन है।
So English language contains preposition, Urdu language having postposition, while Pashto language has both like preposition and postposition. So these are, dear students, parameters. In all languages सिमिलर कैपेसिटी है जो कि प्रिंसिपल्स है, और पैरामीटर्स डिफरेंट है, और ये पैरामीटर्स भी बेस्ड है किस पर? प्रिंसिपल्स पर। ये पैरामीटर्स वैसे नहीं बनते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। सो बेसिक स्टांस जो चॉम्स्की का बेसिक नोशन है वो ये है कि एक कैपेसिटी है, मेंटल लैंडस्केप है, विच इज सिमिलर फॉर ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड विच इज नेचुरल फिनोमेना, विच इज गॉड गिफ्टेड फिनोमेना, और विच इज इनबर्न कैपेसिटी सिमिलर फॉर ऑल लैंग्वेजेस। और ये उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि पैरामीटर्स और प्रिंसिपल्स उन्होंने डिस्टिंक्शन बनाए हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अभी आप एबल होंगी to define that universal grammar and the important components of universal grammar. If you have any question, you can ask. You are welcome to ask questions. Thanks for watching. Assalamu alaikum.